Okay, good morning everyone. Welcome to this peer-to-peer faculty development program. This is the 5th edition, as we all know. Continuing with what Paranjya ma'am explained and discussed regarding the importance of social media, my topic is somewhat related to it. That is how we can create content, and specifically the e-learning content with the help of easy to use video editing softwares. So so we'll be discussing why we need basically to learn the basic form of video editing of softwares. What is the need? What is the requirement? And not only for the students but also for the teachers, specifically after this COVID pandemic era, that pandemic period that we all we have gone through. So what is the importance? So then I'll be discussing about the use of software, again, what kind of softwares, the difference between various paid softwares and free softwares, the things that are available online free of cost but actually gets you a lot of virus and malware. So we'll discuss about that thing also. Then I'll also move forward towards how we can share content. There are different formats by which we can share content, and followed by the main software that I'll be discussing, which we can easily use, which we can easily download, and we can apply the basics of the video editing on that. And I'll also be showing one video that I made using the same video editing software. Okay, so creating content, as we all know, has been increasingly in demand. After COVID, we have seen a lot of new videos, new kind of videos that we have seen not only on Instagram but also on YouTube, platforms like YouTube, and there are other platforms such as Vimeo, which has seen increasingly a lot of short films. Since I am into filmmaking, so we see a lot of films on YouTube as well as on this particular platform called Vimeo.com, which is again one of the most prominent, and which has more of a premium content on it. Moving on, blogs, as we all know, we write blogs, we read blogs, but now the thing that we usually discuss in our day-to-day lives is vlogs. How vlogs are actually changing the the whole society, the whole situation around us, how things are related. There are many students in our DME Media School who are actually doing a lot of vlogging. They are showcasing their day-to-day lifestyle, which includes how they are doing well in college, they are participating in events, they are attending classes, and some of them are even getting monetized. That means they are getting some amount of money from YouTube, from Google, because they have reached that particular criteria, right? So it is definitely students are doing it, and a lot of teachers are also doing it on day-to-day basis. They are working from 9 to 5 in the morning, and evening they are making videos and uploading them on YouTube by using these similar softwares. And so it's a very good way of obviously teaching to the maximum audience out there, to the masses, as well as it's a very good way of passive income as well. Moving on, so there are different types of softwares I wanted to discuss. So there are, generally we divide the softwares into two categories, that is the open source software and the commercial softwares. Now the basic difference that we need to understand between the two types of softwares is that कमर्शियल से ही हमें समझ आता है कि जहाँ पे there is some kind of money, some kind of capital is involved, where we are actually purchasing some kind of service from a particular organization, from a company, and we are buying their services, right? And in return, we are getting that particular software to use. On the other hand, open source software are freely available. Now they are not, we can say that एक हमेशा एक जनरल थॉट आता है कि अगर वो फ्री हैं तो वो अच्छे नहीं होंगे, but it is not the case.
बहुत सिंपल एक बेसिक एग्जांपल से शुरू करता हूँ मैं. जब हम लैपटॉप खरीदने जाते हैं मार्केट में, राइट, सो वी आस्क what is the RAM, the processor and everything. Then we ask one of the major question, इसमें MS Office, MS Word, MS Excel है या नहीं, right? So answer salesman दो तरह के देगा कि हाँ pre-installed है नहीं, और या फिर दूसरा आंसर होगा कि नहीं है. और फिर उसके बाद वो अगर नहीं होगा तो आपको लगेगा कि यार इसमें तो है नहीं तो कैसे होगा. तो then again he'll give you two options कि I will get you installed, I will charge you 500 rupees and I will give you all the softwares what you need, right? The second answer that he'll give is, I will charge you 5,000 rupees or 6,000 or 7,000 rupees and I'll give you the original bundle of MS Office, right? So then you think, what should I do? Should I save money, go for a 500 rupee option, or should I go for the original, the commercial version where I can get whole bundle in 5 to 7,000 rupees, right? But वो तीसरा ऑप्शन कभी नहीं बताते हैं, that is of open source software. So even if you don't have MS Office, which includes Word, Excel, PowerPoint presentation, there are open source software which are freely available online, by which you can easily download on any of your system, be it a Windows or a Mac, and you can use it very easily and conveniently, right? So similarly, in video editing, we also have two types of softwares. So commercial software includes software such as Adobe's Premiere Pro. Then we have Apple's Final Cut Pro. Then we have DaVinci Resolve. Now all these companies offer free version also, the trial version, which is of 7 days, even a 1 month. DaVinci Resolve offer an unlimited trial free version also, but it also has the paid version. And the ranges of these software starts from 20,000 to 30,000 to 50,000, depending upon what kind of features or what kind of bundle we are buying, right? On the other hand, open source softwares are free of cost. Nobody will charge you. You simply have to search it and download it directly, right? अब बेसिक डिफरेंस समझने के बाद हम ये समझते हैं कि ये डेवलप कैसे होते हैं. सो कंपनीज डेवलप करती हैं. फॉर एग्जांपल Adobe is developing this software where there are hundreds of software engineers, software developers working in this one company and making this very good, very interesting and professional software. But there are many such developers, software developer, who are sitting all over the world and developing one particular software, right? So it's not just one person who makes an open source software, it is multiple people who are making these softwares. They are developing day by day. One of the very easy example that I would like to give you of open source software is VLC Player. Everybody, I hope, uses VLC Player, right? The Video LAN Connect, the Video LAN client, that is the full form. It is an open source software. Why it is widely used, though it is banned in India for now, but it is still being widely used in our mobile phones, tablets, and on our computer system. Why? The reason being, it is suitable to play each and every type of video, or even we can use it to stream online. For example, I want to stream my session on YouTube. I can simply go to VLC Player, connect with the camera, connect my laptop with the internet, and I'm good to go. I'm able to stream, right? So these kind of features are being provided by the software developers from all over the world. Now they don't charge money, right? They do that to practice. They do that to get their portfolio strong, right? So VLC Player is again one such example. So if I specifically talk about the open source video editing software, हमें engaging content बनाने के लिए we need to keep in mind few things, right? The use of effects, the use of transition, the use of text, and how we can record a video and put it on to the system, and easily with the help of few cuts we can create a very interesting video or a content that is easily available for students who are sitting far away from us.
we can upload that similar content to all the social media websites and even on our own ERP system, that is the Callpol, where the students can engage, can learn through those particular videos. So this is one such thing that helps us, to grow, and it's one of the best way to, promote blended learning, right? Okay, so since we are making the content, that means that we need to share it to the world. If you are just making it and keeping it in our computer systems, that means there is, it's of no use. It's eating the memory of your computer system. It should be there out for the world, for the students, for the people who all across the world can, watch those particular videos, websites or social media platforms. We need to just be careful about the various technical aspects, which includes the format, 16:9, which is basically this particular projector format, or if we vice versa, when we use a phone, that is 9:16, right? Then Instagram has 1:1 of ratio. So in ratios का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है while we are editing in the particular software. And of course, if the content is consumed by the right kind of audience, then we can get excellent results. There are people who are earning thousands, lakhs of rupees just by posting the right kind of content. ज़रूरी नहीं है कि हमें वीडियो के सामने ही आके बोलना है. हम सिर्फ अपनी आवाज़ के थ्रू और with the help of visuals, with the help of graphics, we can create such kind of content. And it is a very good way, again, of passive income as well. The software that I wanted to discuss with you all, that is OpenShot video editing software, which was again, why OpenShot? नाम से ही पता चल रहा है कि it is an open source video editing software, freely available, developed by Jonathan Thompson in 2008. So 2008 it got officially launched, but on a monthly basis वो डेवलप होता जा रहा है. उसका जो कोड है, जो पूरे ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का जो कोड है, जो कोडिंग हम जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स करते हैं, दैट इज ओपन टू एवरीवन. सो इफ एनी वन ऑफ यू इज इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यू कैन ईजिली गो एंड फाइंड द कोड एंड यू कैन एक्चुअली एडिट द कोड. अगर हम प्रीमियर प्रो या फिर फाइनल कट प्रो जैसे सॉफ्टवेयर्स की बात करें, वी कांट एडिट द कोड ऑफ दीज सॉफ्टवेयर्स बिकॉज दीज आर प्रोटेक्टेड सॉफ्टवेयर्स बाय द कंपनी ओन्स इट. बट ये जॉनथन थॉमसन ने डिस्कवर तो किया है, इसको बनाया तो है, इसको आइडिएट किया है, बट इसको एक्सपैंड पूरी दुनिया से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेवलपर्स करते हैं. इवन software developers who are here in India also help in improving this. So currently we are using the 3.0 version, the latest version, which is available. So इसके USPs क्या हैं? It is easy to use, it is powerful, stable, it runs on a basic machine. Okay. एक बहुत बेसिक हमारा मिसकंसेप्शन रहता है, अगर हमें वीडियो एडिटिंग करना है, हमारे पास एक पावरफुल मशीन होना ज़रूरी है. दैट इज़ ट्रू, बट वो प्रोफेशनल लेवल पे. अगर एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, हमारे पास एक बेसिक लैपटॉप है विद बेसिक, आजकल कम से कम 4 GB रैम का लैपटॉप इज़ अवेलेबल विद i3 और Ryzen 3 प्रोसेसर, और इवन अगर उससे भी नीचे प्रोसेसर अवेलेबल है, नो प्रॉब्लम, ये सॉफ्टवेयर उस पर भी चलता है. आई हैव पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड on the basic laptops as well. So that is the beauty of this software. If we can't run Adobe Premiere Pro on a basic laptop or a Final Cut Pro on MacBook Air, for Final Cut Pro also we need MacBook Pro, right? चलेगा, but अटकेगा, it will lag, it will freeze, right? Because it doesn't support the MacBook Air M2 chip now supports a good processing speed, but the older MacBook versions doesn't support that much of the speeds. So it is again available on Linux. Linux is basically used by the software developers for developing these kind of softwares. OS, we all know OS 10 is of Apple and Windows. It supports multiple audio, video and image formats, which is a blessing. Usually when we do video editing, there are various softwares जो एक particular video format को support नहीं करते हैं. For example, if I am using Premiere Pro on Windows and I have a footage of iPhone,
that is saves at .mov. तो वो जब मैं उनको डालूंगा तो it will create some kind of glitch, then I need to convert it to MP4 and things like that. So but open short basically helps us in solving all these issues, and यहाँ पे हम multi cross format की editing कर सकते हैं. And of course it is a free to use professional software. Professional मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है because again कहीं जगह पे ये आज भी प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है. इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, एक केस स्टडी तो मैं नहीं कहूँगा, बट एक कहानी है जो मेरे कुछ एक्टिंग स्टूडेंट्स हैं जो अभी करंटली मुंबई में हैं. दे आर इन देयर स्ट्रगलिंग फेज, दे आर फाइंडिंग द राइट काइंड ऑफ acting jobs. So when you are in that struggling phase, you don't have the other way of earning money. छोटा मोटा काम मिलता है, but then I advise these two of my theater students that you should learn editing, and you don't have to do investment. You have your basic laptop, just download this software and you can easily earn with the help by getting work. So we can get video editing work very easily with the help of a lot of Facebook groups are there, which gives us, there are a lot of clients there, so they can give you a lot of work, starting from very basic 1,000 rupee job to a 5,000 rupee, 10,000 rupee job, depending upon कि आप किस तरीके से editing या time दे सकते हैं. So again, a passive income option where my students are actually in daytime they give auditions, they do the struggle part, and in the evening they do editing and they are earning passive income. So this is one such thing that I wanted to share. हाय, मेरा नाम नरेंद्र लूथरा है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, और मैं पिछले 17 साल से यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा हूँ. असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ और मेरी पढ़ाई भी पंजाब यूनिवर्सिटी से ही है. फ़िलहाल मैं दिल्ली में हूँ एक ट्रेनिंग सेशन में, जहाँ पर मैं वर्ल्ड ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए ट्रेनिंग के लिए यहाँ आया हूँ. मैं मिस्टर माधव शर्मा की देखरेख में ये ट्रेनिंग कर रहा हूँ और वर्ल्ड प्रोसेसिंग स्किल में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रांस में होने वाले 10वें इंटरनेशनल ओलंपिक्स में हिस्सा लेने जा रहा हूँ. मैं पिछले 2 साल से माधव सर से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, जिसमें कि मुझे अपने वर्ड प्रोसेसिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने में मदद मिली है. ये ओलंपिक्स का जो सारा ऑर्गेनाइज है ये सार्थक और नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से करवाया जा रहा है, जो कि यहाँ के हिंदुस्तान के बेहतरीन स्किल वाले जो दिव्यांग हैं उनके लिए ये कंपटीशन किया जा रहा है. मैं शुक्रगुजार हूँ नाई, नेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सार्थक और दिल्ली मेट्रोपॉलिटन कॉलेज का, जिन्होंने मुझे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के काबिल समझा. मैं शुक्रगुजार हूँ DME नोएडा का और यहाँ से डीन डॉक्टर अमरीश सक्सेना जी, यहाँ के मीडिया स्कूल के HOD मैम सुष्मिता बालाजी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और मेरे लिए अपने इस संस्था में, मेरे इस कॉलेज में मेरे लिए ये सब सहूलत दिलवाई कि मैं यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर सकूँ. थैंक यू. सिंपल क्वेश्चन है आपसे कि टॉकिंग अबाउट द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एडिटिंग. विंडोज़ के साथ पहले से मूवी मेकर आता था जब शुरुआत होती थी, उसमें ऑटो मूवी भी बनती थी. करेक्ट. कि आप वीडियोस डाल दीजिए, मूवी बन जाती थी. मेरा सिंपल क्वेश्चन है 2 इसमें कि जो फर्स्ट इज़ द इनपुट एंड द आउटपुट. द इनपुट जो फाइल्स हैं, क्योंकि ये मुझे जो अभी मैंने इसको पढ़ा, जो उसमें ये बहुत हैवी जो फाइल फॉर्मेट्स है जैसे 4K या उसको नहीं करेगा, बिकॉज ले सकता है बट आपका सिस्टम वो कॉन्फ़िगर होना चाहिए. तो बेसिक जो वीडियो एडिटिंग के लिए सिस्टम चाहिए, इसको द MPEG 4, जिसे हम लोग MPEG 4 बोलते हैं, जिस मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जो होता है 4. क्या वो इनपुट लेता है? क्या वो उसी पे ही आउटपुट देता है? दिस इज कॉल्ड द नेटिव एडिटिंग. तो ये मेरा क्वेश्चन है, क्या इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से हम नेटिव एडिटिंग कर सकते हैं या नहीं? Sir, again, if I talk about the specific topic that is basic e-content generation, teachers not like you or me who are totally into this, but teachers who are absolutely are very new to the editing,
right? So this software will help those particular teachers without investing any single amount of money, right? If you are talking about the technicalities, again, this will not help in that particular way, right? So this is only, for the benefit of the teachers who want to create something with the help of the videos, with the help of graphics they are having, and which totally helps on a basic level, right? With their basic laptops. That's the thing. I agree with you Yeah. कि भाई ये basic है. Yeah. For example कि Yeah. मैं एक simple teacher हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा editing नहीं आती है. मेरे पास कुछ photographs हैं जो मुझे students को दिखानी हैं. वो मुझे timeline पे इसको the AV के तौर पे करना है. Correct. जैसा आपने अपनी प्रेजेंटेशन में उसको MPEG में कन्वर्ट किया है, Correct, correct. PPT को MPEG में कन्वर्ट किया, बार बार आपको रोकना पड़ रहा था. Correct. सो क्या मैं इसको किस आउटपुट में लूंगा? Correct. इट्स MPEG 4, MPEG HD, किस में नहीं लूंगा? सर, MPEG 4 में it will work. ये मेरा क्वेश्चन था कि MPEG 4 में हाँ, इनपुट और it will आउटपुट work. पॉसिबल है? Definitely. दिस इज कॉल्ड नेटिव एडिटिंग. Yeah, this will work. जिस फॉर्मेट पे आप शूट कर रहे हैं उसी पे ही format मिलेगा पे ही आपको, देख रहे हैं. आउटपुट उसी पे ही मिलेगा. That's Correct. मेरा यही करेक्ट. बट अगेन अगर हम दूसरे किसी और कैमरा से शूट कर रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर हाँ, फॉर्मेट सेम होना चाहिए. राइट. बट वही है, अगेन MOV पे शूट करे तो MPEG 4 ही वो आउटपुट बेसिक निकालेगा. करेक्ट. यस मैम. Hello, Madhav sir. Thank you so much for this presentation. This was really insightful. Thank you. And my question to you is regarding this open source platform. I want to understand the reason why, so many engineers put this much of hard work for, in order to do coding and Correct. come up with altogether a Correct. better version of that software. Correct. So what is the reason? The reason is that nobody likes monopoly, right? Yeah. We don't want to get ruled by just a single particular organization that is whole soul responsible for providing one particular software, right? So that's why the open source terminology came up. The engineers, the software developers who were once working for big giants like IBM, for Apple, for Windows, they were totally, this is one such documentary that I came across way back when I was studying in college. So then, the group of people, they formed this particular, this thing that let's not confine a software which is, which should be used by people all around the world at a wide level. Should not, the people should not be, constrained with by the money or by any other feature. So that's why, to break that monopoly, to break that, the system of domination by a particular software company, the open source has been derived. And each and every software that we buy or we use has an open source version available, right? Oh. So it's basically like you have the premium option available, right? Then you have the free option available. Apple iPhone sells a lot. Android's 10,000 rupees, 5,000 rupees also sells, right? So it's all about the features, the availability, right? So not each and everyone is capable of buying a software. That's why open source helps us a lot. One such again software is Audacity, Yeah. which we use when we are teaching in BGMC. We help our students, guide our students to use Audacity, promote students to use Audacity, Adobe Auditions also. But again, Audacity is again what? It is an open source software. So definitely to break that thing, ki nahi, we can't be dependent upon one particular organization. Open source is there for you. Okay. Another thing I want to ask you, since these codes can be manipulated, so what is the likelihood that any such software can be corrupted? Or in that case, what is the possibility that a better version of the same software is provided? So there are sets of protocols that has been applied on each and every open source software, which is governed by the webmasters. So webmasters basically a group of people who actually governs and
टेक्स केयर ऑफ कोई ऐसी मैल फंक्शनिंग ना हो या फिर कोई ऐसा मैलवेयर या वायरस ना स्प्रेड किया जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ बीटा टेस्टिंग on these softwares before releasing it to the normal general public. The beta testing goes on even on the apps जो हम देखते हैं. कभी भी आप ऐप स्टोर पे देखेंगे बीटा वर्जन हमेशा अवेलेबल होता है किसी एक पर्टिकुलर ऐप का. सो बीटा टेस्टिंग इज़ व्हाट, वो एक पर्टिकुलर स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल पे वो टेस्ट करते हैं. अगर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, इंटरफेस प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर अटक रहा है, मैलवेयर इश्यूज़ हैं, सॉफ्टवेयर इश्यूज़ हैं, वहाँ पे दे स्टॉप दैट, उस पर्टिकुलर वर्जन को वहीं पे रोक दिया जाता है, उस पर रीवर्क किया जाता है, राइट. एंड ओपन सोर्स में there is a possibility of creating such kind of things like creating viruses, but again there are people who are watching you online कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको वहीं पे रोका जा सके, राइट. इंडिया में इतनी एडवांसमेंट्स अभी नहीं हैं, बट इन यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिकन कंट्री वहाँ पे there are people who are watching you, what you are doing, what kind of coding you are doing, right. But again, if we download a crack version of Adobe Premiere Pro or any other premium software from torrent or from any other website, उसमें malware आने के chances are more, और that will again harm your system. आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके system को वो खोखला कर देता है. So that's one of the advantage of, if you are not going for a premium version, we can go for a open source version which is actually safe. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग बहुत मिसलीड होते हैं इस चीज़ को लेके. पहला चीज़, एप्पल का कोड होता है, एप्पल जो सिस्टम है, एप्पल जो कंपनी है, उसका एक कोड है. इफ़ यू नीड अ फ्यूचर विंडो, तो आज का एप्पल खरीद लो. द रीजन इज दिस, जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो खराब कब होते हैं, जब वायरस आता है. एप्पल में वायरस नहीं आता, क्योंकि जो भी वायरस बनाते हैं वो सारे विंडोज के लिए. बोला तुम पायरेटेड विंडो डालो, आप डालो. जैसे ही डाला आपने, इसके बाद उसने तुरंत इंटरनेट के साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं. कनेक्ट करने के बाद आप अपनी सारी फीड, जितनी भी डेटा है, वो सारा आप विंडोज को दे देते हैं. उसके ऊपर आपके ऊपर छापा पड़ता है, स्पेशली फॉर द प्रोफेशनल एडिटर्स. हम लोग क्या करते हैं, लो वर्जन, सर जानते हैं उस चीज को, चटर्जी सर जानते हैं इस बात को, कि लो वर्जन हम सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि एक जो सॉफ्टवेयर अगर हम लेने चाहें, फोटोशॉप 36,000 का पड़ता है एक साल का सब्सक्रिप्शन. हम उसको फ्री में लेना चाहते हैं, फ्री में लेते हैं, आप चलाइए, कुछ नहीं होगा. लेकिन मल्टीपल वर्क करेंगे, आपको कंपनी पकड़ लेगी, एडोबी पकड़ने के बाद आपको, एक तो अगर आप पैसा नहीं चुकाएंगे, यानी कि आपको लेना पड़ेगा 3 साल का सब्सक्रिप्शन, 36 प्लस 36 प्लस 36, 3 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा. प्लस आप उनकी रडार पे आ जाते हैं. तो कभी भी इस तरीके का कंटेंट होता है तो कोशिश करें कि कभी भी काम कर रहे हैं, इंटरनेट हटा के करें. मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है, क्योंकि चोरी भी करना है, उसके भी एथिक्स हैं. Only if you are using crack versions, if you are using open source, तो आप बिंदास इंटरनेट यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर वाले कर रहे हैं तो एक तो लो वर्जन कीजिए जिसपे इंटरनेट की जरूरत ना हो. तो ये चीज था कि मैं ये चीज शेयर करूं कि ये बहुत जरूरी है. इवन MS ऑफिस ऑल्सो, आपको एक बार किसी ने पकड़ा तो सारे सॉफ्टवेयर वाले आ जाएंगे आपके पास. So that's why open source is safer option. My name is Riddhiv. I am from BGM first year. मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हमें आशीष सर ने फोटोशॉप का असाइनमेंट दिया था, तो अगर उसका भी सब्सक्रिप्शन हमें खरीदना पड़ता, तो अगर हम उसे बार बार यूज़ करते हैं, ऐसे जैसे आपने कहा कि उसमें फिर बार बार यूज़ करके हमें पकड़ा जा सकते हैं हम उसमें, तो हम इसका क्या फिर रीज़न, क्या सोल्यूशन है उसका, हम यूज़ कैसे कर सकते हैं उसका असाइनमेंट्स कंप्लीट करने. उन्होंने कहा कि लाजपत नगर जाओ, वहाँ से सारे डलवा लो सॉफ्टवेयर, तो फिर क्या करें सर? अगर स्पेसिफिकली फोटोशॉप का क्वेश्चन है तो आशीष सर बहुत अच्छा आंसर देंगे आपको.